Wait a minute. Hello. Welcome to another video. This is going to also take 1.5 hours, I think, staffing chapter. Let's start. Well, first we will see what is with the syllabus with. So, mm, just put it here. Okay, so understand the concept of staffing, importance of staffing, specialized duty, अच्छा HRM के बारे में पढ़ना है, then steps in the process of staffing, then meaning of recruitment, sources of recruitment, merit and demerit of internal external sources of recruitment, meaning of selection, steps of selection. Sorry for that. ये सब होली ये सब होली के चक्कर में हो रहा है. Understand the concept of training and development. फिर ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना है और ज़्यादा, फिर ट्रेनिंग अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सब चीज़ हम लोगों को पढ़ना है. तो चलो अब सिलेबस को बीच से हटाते हैं, स्टाफिंग चैप्टर पे जाते हैं एंड पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं. सब बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है. थोड़ी सी आवाज़ इस बार लो आएगी बिकॉज थक गया हूँ यार ना. The foundation of any organization, the talented, hard-working people who are the principal assets of a firm. It is an established fact that the growth of an organization requires the continual infusion of quality staff. Thus, adequate staffing or the provision for appropriate human resource is an essential requirement for any organization's success. It is therefore believed that an organization can achieve its objective only when it has the right person for the right positions. After planning and selection of the organizational structure, the next step in the management process to fill the various posts provided in the organization. This is termed as the management of staffing function. In the simplest term, staffing is putting people to jobs. It begins with the workforce planning and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation, performance, appraisal of workforce. In other words, staffing is a part of process of management which is concerned with obtaining, utilizing, and maintaining satisfied workforce. Today, staffing may involve any combination of employee, including daily wages, consultants, contract employees. Staffing recognizes the importance of every single person employed by an organization, as it is the individual worker who is the ultimate performer. Staffing has been described as the managerial function of filling and keeping filled the positions of the organization structure. This is achieved by first of all identifying requirement of workforce, followed by recruitment, selection, placement, promotion, appraisal, and development of personnel. Okay, ये सारे steps हैं staffing के. To fill the roles designated into the organization structure in a new enterprise, or staffing function or follows the planning and organizing function after deciding what is to be done, how it's to be done, and after creation of the organization structure, the management is in position to know the human resource requirements of the enterprise at different levels. Once the number of types of personnel kept to be selected is determined, management starts with the activities related to recruiting, selection, training of people to fulfill the requirements of the staffing is a continuous process because jobs may be created and some of the existing employees may leave the organization. ठीक है भाई, मतलब वो बता रहे हैं कि पहले अपन ने प्लानिंग बनाई, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, तो अब हम मैन फोर्स रिक्वायरमेंट ढूंढेंगे, फिर उनके लिए रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट, फिर ना जो भी प्रोसेस है वो भी हम देखने वाले हैं. तो ये पूरा आप डेफिनेशन मान सकते हो. लाइट ब्लू कर देते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. Important. In an organization, there is a need for people to perform the work. The staffing function of management fulfills the requirement and finds the right people for the right job. Basically, the staffing fills the position as shown in the organization structure. Human resources are the foundation of any business. The right people can take your business to the top. The wrong people can break your business. Hence, the staffing is the most fundamental and critical drive.
of organization performance. The staffing function has assumed greater importance these days because of the rapid advancement in technologies, increasing size of the organization, complicated behavior of human beings. Human resources are the most important asset of an organization. The ability of an organization to quality of its uh, ability of an organization to achieve its goal depends upon the quality of its human resources. Therefore, staffing is a very important managerial function. Samudra, it is very important because at the end of the day, it's the people of the organization that are the actual end workers which actually do the work. No organization can be successful unless it can fill and keep filled the various positions provided in the structure with the right kind of people. Proper staffing ensures the following benefits of the organization, helps in discovering and obtaining competent personnel for, oh sorry, competent personnel for various jobs, makes for higher performance by putting right people on the right job, ensures continuous survival of the growth of enterprise. ये क्या स्टाफिंग इम्पोर्टेंस है क्या? ऐसे बता रहे हैं इम्पोर्टेंस, कोई हेडिंग हेडिंग नहीं है? अरे यार सीबीएसई एनसीईआरटी भी ऐसे ही है. चलो फिर तो कुछ हेडलाइन हेडलाइन बनानी पड़ेगी. हाँ, helps in discovering and obtaining competent personnel, discovering and obtaining competent personnel, higher performance, putting the right person on right job. इसको हम लोग पिंक कर देते हैं. And so the continuous survival and growth of the enterprise through succession planning for managers helps to ensure optimum utilization of human resources. ये तो आप हर जगह लिख दो यार. By avoiding overmanning, underutilization of personnel, of high labor, blah blah blah. At the same time, avoids disruption of work by advances in shortages of personnel. Improves job satisfaction and morale of employees through sorry improves job satisfaction and morale of employees. Objective assessment, fair reward for their contribution. Staffing function must be performed efficiently by all organizations. If right kind of employees are not available, it will lead to waste of the material, time, food, energy, resulting in lower productivity, poor quality of products. The enterprise will not be able to sell its products profitably. मैं reading fast इसलिए कर रहा हूँ because भाई fast track revision है. Also sell its product to profitability. It is therefore essential that that right kind of people must be available at the right number at the right time. They will be given adequate training so that wastage is minimum. They must also be induced to show higher productivity and quality by offering them proper incentives. Staffing is a part of HRM. It is a function which all managers need to perform. It is separate from a specialized function, and there are many aspects of human relations to be considered. It is the job of a manager to fill position of the market of the in their organization and to make sure that they remain occupied with qualified people. Staffing is closely linked with organizing. Since after the structure and positions have been created, people are required to work in these positions. Subsequently, they need to be trained and motivated to work in the harmony with the goals of the organization. Staffing is seen as a generic function of management. Generic function of management. ठीक है. और also staffing is closely linked with the organizing. क्योंकि organizing structure जब बनता है उसी के बाद तो आप staffing करेंगे ना भाई. The staffing function deals with the human element of management. Managing the human component of organization is the most important task because the performance of an organization most important. It depends upon how well this function is performed. So जो इतना important है, इतना cardinal है. The success of an organization achieving its goal determined by the great extension of the competence, motivation, and performance of its human resource. It is the responsibility of all managers to directly deal and select people to work for the organization. When the manager performs the staffing function, his role is slightly limited. Some of these responsibilities will include placing the right person on the right job, introducing new employees to the organization, training employees and improving their performance, developing abilities, maintaining their morale, and protecting their health and physical. In small organizations, manage मतलब देखो ये बताना चाह रहा है कि देखो यार बहुत ही ज्यादा काम है ना. हाँ यहाँ तक कर लो. बहुत ज्यादा काम है. ये ऐसे याद करने को नहीं है, बस ऐसे कर दिया है क्योंकि अच्छी चीज लिखी है.
तो इसमें क्या होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर खुद कर लेता है, बट एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन्स employed increases, a separate, wait a minute, organizations grow, separate department called HR department is formed, which has a specialist in managing people. The management human resources is specialized. The number of human resource specialized in size of its department given science of business for blah 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 blah. HR management includes many specialized resources. Personnel must perform these are चलो ठीक है, फिर से अब थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा, ब्लू से लिखते हैं चलो। रिक्रूटमेंट, that is search for qualified people and proposing them to join the job. Analyzing job, prepare job description, developing compensation and incentive plans, training and development of employees, efficient performance, career growth, maintaining labor relations, union manager relations, handling grievances and complaints, um, providing for secure social security welfare of employees, defending the company और legal complications। देखो कितना काम है एचआर का, इसीलिए अलग से दे दिया है एचआर डिपार्टमेंट, इवोल्यूशन ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। देखो आई डोंट थिंक इट इज देयर इन द सिलेबस। मैं एक बार फिर से सिलेबस आपको दिखा देता हूँ, है ना, वरना मैं फालतू में ज्यादा मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि है ना, क्या है, अंडरस्टैंड द स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, कि आप पूरा एचआर डिपार्टमेंट का हिस्ट्री पढ़ो, वो नॉलेज के लिए अच्छा है, बट अभी हम नॉलेज गेन करने नहीं आए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसा करो, यहाँ से हाईलाइट ऑफ करो इसकी, और यहाँ पे एक अच्छा सा बढ़िया सा ऐसे कट्टा लगा दो। ये बढ़िया लग रहा है, बढ़िया, ठीक है। Staffing process, अब सही जगह पे हैं। As you are now aware, the prime concern of the staffing function is the management process, is the timely fulfillment of the manpower requirement within an organization. These requirements may arise in case of starting of a new business or expanding the existing business. So one may arise as a matter of need for replacing those who quit, retire, or transfer, or promoted, or are fired from the job. In any case, need for the right person or the right job hardly needs to an ओवर एम्फेसिस, ठीक है। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप देख के समझ जाओगे, है ना, तो इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलना चाह रहा है वो, ये बोल के बता रहा है कि इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बट जस्ट एज वाटर, एज अ फ्रेज, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। क्या बात कही है यार। एम्प्लीफाइज द फैक्ट दैट, देखो भाई यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं जिनको पैसे चाहिए, जिनको जॉब चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा है, लेकिन राइट पीपल नहीं मिल रहे हैं ना। तो वाटर वाटर पीपल, वो वर्कर वर्कर एवरीवेयर, नॉट वर्कर टू एम्प्लॉय। amplifies the fact that two-thirds of drinking water, blah blah blah. So the right person for the right job, as such as it is, every appreciate staffing as a process, manpower requirement, blah blah blah. And given the right person is scarce, the right person is scarce, there's need to market the job and the organization to the blah 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 single job vacancy wide। अटक देखो यहाँ पे वही वो बहुत फालतू की बातें कर रहा है, मेरे को तो गुस्सा सी आ रही है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हाँ, अब यहाँ पे बीपीओ की थोड़ी बात हो रही है, तो थोड़ा सा बीपीओ पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीपीओ थोड़ा सा जरूरी होता है ना। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, by virtue of being extrovert, well versed in English speaking, one needs to be trained in the relevant of business process, telephone conversation etiquettes, as well as diction adaptation before actual placement. The employee experience during orientation, placement from his or her impression of the job or organization, so staff training and department, blah 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 blah। जहाँ से मेन चीज आती है, ये चीज आपको याद में रखनी है, बिल्कुल से अच्छे से याद में रखनी है, छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छे से। You are aware
that while designing the organization structure, अच्छा चलो पहले एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, शुरू करे हुआ 14 मिनट हुआ है, तो वी आर 2.5 मिनट पर पेज विच इज गुड. यू आर अवेयर, तो 14 के हिसाब से 15-75 मिनट लगने चाहिए, बट 90 भी लग जाएंगे तो कोई बात नहीं. यू आर अवेयर दैट व्हाइल डिजाइनिंग द organizational structure we undertake an analysis of the decision and the decision making levels, activities as well as relationship among them, with a view of evolving the horizontal and vertical dimensions of the structure. This various job positions are created clearly. Educational qualification, prior experience, and so on. Thus, understanding manpower requirement is not merely a matter of knowing how many persons we need, but also what type. तो ये थोड़ा अच्छी चीज लिखी है कि भाई देखो सिर्फ यही नहीं जानना कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए वो भी पता होना चाहिए, है ना. तो ऐसे पोजीशन तो आप हो सकता है फिजिकली चैलेंज लोगों को मांगो, स्पेशल एबिलिटीज वाले लोगों को मांगो, कि आपको थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी निभानी है तो आपको चलो थोड़े स्पेशली एबल्ड लोग को वर्कफोर्स में ले आए, ठीक है. डाइवर्सिटी के लिए हो सकता है आपको अलग अलग जगह से लोग चाहिए हो. अगर आपको जेंडर रेशियो नहीं मिल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आप थोड़े वेमेन को वोट डालो, या फिर अगर वेमेन ज्यादा है मेन कम है तो मेन को अपने उसमें वो करो, एम्प्लॉय करो. तो ये सब भी चाहिए, पता होना चाहिए. और ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स वुड नेसेसिटेट workload analysis of on the one hand and workforce analysis on the other hand. Workload analysis would enable the assessment of the number and types of human resources necessary for the performance of various jobs and accomplishment for organizational objectives. Workforce analysis would reveal the number of type available. In fact, such an exercise would reveal whether the whether we are understaffed, overstaffed और optimally staffed, जो कि कभी नहीं होता है ना. अंडर या ओवर निकलता है. It may be pointed out that neither overstaffing nor understaffing is a desirable situation. Can you think why? In an exercise would perform the basis of subsequent, a situation of overstaffing somewhere would necessitate employee removal or transfer elsewhere. A situation of understaffing would necessitate the starting of the recruitment process. However, before that can be done, it is important to translate the manpower requirements into specific job description and the desirable profile of its occupant, the desirable qualifications, experience, personality, characteristics, and so on. This information becomes a base for looking for potential employees. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने ये और बताया है कि ओवर स्टाफिंग भी बेकार है, अंडर स्टाफिंग भी बेकार है. अब जिसके पास कॉमन सेंस है वो समझ जाएगा क्यों, वरना मैंने इंग्लिश में पढ़ ही दिया है. अब मैं हिंदी में समझा के वीडियो लंबी नहीं करूंगा, ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ी रिक्रूटमेंट की बात हो जाए, ठीक है. Recruitment may be defined as a process of searching for prospective employees and क्या बोल रहा हूँ यार, stimulating them to apply for jobs in the organization. ये हो गया अपना ग्रीन कलर, तो हो गया ब्लू कलर कर लेते हैं. The information generated in the process of writing the job description and the candidate profile may be used for developing the situations vacant advertisement. Advertisement बनाओगे भाई साहब, आप एडवर्टाइजमेंट बनाओ, जल्दी बनाओ, बनाओ एडवर्टाइजमेंट, वेट किसका कर रहे हो. हाँ तो अब वही है यार, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पोटेंशियल कैंडिडेट ढूंढेंगे, कहीं कहीं से ढूंढेंगे, इधर से ढूंढेंगे, इधर से ढूंढेंगे. वेरियस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एसेंशियल ऑब्जेक्टिव, क्रिएट a pool of the prospective job candidates, both internal external recruitment. Sources of recruitment may be explored. इंटरनल लिमिटेड एक्सटेंड फॉर फ्रेश टैलेंट एंड वायरल. हाँ ठीक है, वो देखो ये चीज मैं इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी पूरा सेक्शन आने वाला है जिसमें रिक्रूटमेंट की ही बात होगी, फिर सिलेक्शन की ही बात होगी, इसीलिए थोड़ा सा इसे तेज पढ़ना चाहिए, है ना. I hope you can understand what I'm trying to say. Selection is the process of choosing from among the pool of prospective job candidates developed at the stage of recruitment. Even in the case of highly stabilized jobs where choices space is narrow, the rigor of the process selection process serves two important purposes. It ensures that the organization get the best among the available. अच्छा रुक जाओ.
हाँ क्या है, best among the available, and it enhances the self-esteem and prestige of those selected and conveys them the seriousness with which the things are done in the organization. The rigor involves a host of tests and interviews described later. Those who are able to successfully negotiate the tests and the interviews are offered an employment contract, a written document containing the offer of employment, the terms and conditions, and the date of joining. Placement and orientation. Joining the job mark द फॉल। अच्छा हाँ, यहाँ पे वो ये कह रहा था कि देखो, पहली बात तो अगर हम लोग मतलब सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से करते हैं तो पहली बात तो ये होता है कि बढ़िया सा टैलेंट आता है। दूसरी बात ये होता है जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है कि भाई साहब क्या बढ़िया जगह जा रहे हैं हम, इतना सारा टेस्ट दे के जा रहे हैं तो कुछ तो उखाड़ा है हम लोगों ने। और साथ में जो कंपनी में जा रहे हैं वो उसने भी कुछ उखाड़ा है, तभी इतने सारे लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और इतना भयंकर टेस्ट दे के आना पड़ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल होता है। Designing a job market marks the beginning of socialization of the employee at the workplace. The employee is given a brief presentation। अच्छे थोड़ा देख लेते हैं कि चल रही है लाइफ की बढ़िया कि नहीं, पता चले मैं फालतू में बक रहा हूँ। अच्छा ये तो नहीं है, मैंने वो ऐसा तो नहीं, वो नहीं हटाया। हाँ देखो, मैं बार बार यही करता हूँ, वो मैंने हटाया ही नहीं। चलो छोड़ो, हो गया तो हो गया। वो पता नहीं मेरा कब से लगा है, वो भी तो नहीं पता। चलो थोड़ा सा मैं जल्दी से कर देता हूँ, ऊपर से फिर से बता देता हूँ। देखो इतना अच्छा काम हुआ था, सब बेकार हो गया। हाँ, स्टाफिंग प्रोसेस। द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हार्डली नीड्स ओवर एम्फेसिस, क्योंकि भैया जरूरत होती है। राइट पर्सन इज स्कार्स, है ना। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और एम्फेसाइज कर देता हूँ, हो सकता है यही आ जाए। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, बिजनेस प्रोसेस एटिक्वेट्स। तो ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बड़े लोग एमएनसीज करते हैं इंडिया के अंदर। एस्टिमेटिंग योर मैन पावर रिक्वायरमेंट्स कर लो, अंडरस्टैंड मैन पावर रिक्वायरमेंट। इतना ही नहीं है कि भाई ये जान लो कि कितने लोग चाहिए, ये भी पता करना है कि किस टाइप के आदमी चाहिए, ठीक है। It is important to translate the manpower requirements into specific job description। फिर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने पड़ेंगे कि आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आपको यहाँ पे वर्कलोड एनालिसिस भी करना है और वर्क फोर्स एनालिसिस करना है। वर्कलोड की आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, कितने लोग चाहिए, मतलब कितना वर्क करना पड़ेगा। और वर्क फोर्स एनालिसिस कितने लोग हैं और कैसे टाइप के लोग हैं, है ना। रिक्रूटमेंट हो गया कि भाई प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय जो हैं, जो अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, उनको सर्च करो और उनको बोलो कि भाई आ जाओ, वो हमारा वो करो, हमारे क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बैठो, काम करो। एडवर्टाइजमेंट, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, हाँ सारे टाइप के जो सोर्सेज अपन को एक्सप्लोर करने हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स developed at the stage of recruitment। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। चलो ये अब पढ़ते हैं, तो इसके पहले मैं थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम देख लेता हूँ कैसी है। Joining a job marks
So the beginning of socialization of the employee at the workplace. The employee is given a brief presentation about the company and is introduced to his superiors, subordinates, and the colleagues. He is taken around the workplace and given the job for which he has been selected. The process of familiarization is very crucial and may have a lasting impact on his decision to stay in the job. Orientation is thus introducing the selected employee to other employees and familiarizing him with the rules and policies of the organization. ये तो आपके दीदी भैया अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कहीं प्लेसमेंट हुआ होगा तो आपको समझ में आता होगा कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, है ना? Placement refers to the employee occupying the position or post for which is selected. Placement मतलब सिंपल है कि उसको जो प्लेस के लिए वो सिलेक्ट हुआ गया है उसको उस जगह पे बिठा दो कि आओ भाई बैठो आपकी सीट पे, ये है ऑफिसर साहब की सीट, तो आपका प्लेसमेंट हो गया। मेरी प्लेसमेंट हो गई है, प्लेसमेंट हो गई है मेरी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैं नहीं मानता हो गई है, मेरे को कैसे पता हो गई प्लेसमेंट? What people seek is not simply a job but a career. Everyone must have the opportunity to rise to the top. The best way to provide such an opportunity is to facilitate employee learning. ठीक है? Organizations have either in-house training centers or have forced alliances with training and educational institutes to ensure continuing learning of their employees. The organizations to benefit in turn. If employees' motivation is high, their competitions are strengthened, they perform better and thus contribute more to the organizational efficiency, um, effectiveness, and efficiency. By offering the opportunities of career advancement to their members, organizations are not only able to attract but also retain its people. As discussed earlier, in most organizations, there is a separate HR department which takes care of the staffing function. But in small organizations, the line manufacturer, line manager is required to perform all the functions of management, which planning, organizing, staffing, directing, controlling. The process of staffing till then include three more stages. अच्छा फिर से पढ़ लेते हैं। एचआर डिपार्टमेंट होता है जो स्टाफिंग फंक्शन का काम करता है, ठीक है, बट जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे मैनेजर को ये सब करना पड़ता है जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो उस केस में ये तीन और काम हो जाएंगे स्टाफिंग के अंदर, वैसे तो नहीं होते हैं बट अब हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर ये तीन और काम पढ़ लेते हैं। अभी तक अपन लोगों ने क्या पढ़ा? चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। मैन पावर, estimating the manpower requirements, recruitment, selection, फिर क्या है ये फोर्थ कहाँ से आ गया? हाँ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद अब क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, बंदे की परफॉर्मेंस पे उसको अप्रेज करो। After the employees have undergone a period of training and they have been on the job for some time, there is a need to evaluate their performance. All the organizations have some formal or informal means of appraising their employees' performance. Performance appraisal means evaluating an employee's current performance and or past performance as against certain predetermined standards. The employee is expected to know where the standards are, and the superior is to provide employee feedback on his or her performance. प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, चलो ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद स्टाफिंग तो खत्म हो जाएगा। फिर रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, बहुत है यार, इतने बड़े बड़े चैप्टर क्यों बनाते हैं? ऐसे तो करते करते टाइम बहुत हो जाएगा। इट बिकम्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस करियर रिलेटेड इश्यूज and promotional avenues for their employees. Managers need to design activities to serve employees' long-term interests. They must encourage employees to grow and realize their full potential.
Promotions are an integral part of people's career, therefore, to being placed in positions of increased responsibility that usually means more pay, responsibility, and job satisfaction. वैसे तो प्रमोशन करियर प्लानिंग आप खुद ही समझ जाओगे तो उसके बारे में खुद लिखना भी कोई वो बात नहीं है, हार्ड बात नहीं है। फिर कंपनसेशन है भैया, पैसे तो दोगे ही ना एम्प्लॉय को कि फालतू में फ्री में रख रखा है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टैब्लिश, जैसे मैं फ्री में यहाँ काम कर रहा हूँ, establish wage and salary plans for their employees. There are various ways to prepare different pay plans depending on the worth of the job. Basically, the price of the job needs to be determined. Compensation therefore refers to all the forms of pay or rewards going to employees. It may be in the form of direct financial payments like wages, salaries, incentives, commissions, and bonuses. And indirect payments like employer paid insurance and vacations, blah 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 blah. Direct financial payments are of the two types, time based or performance based. Sorry for that. A time based plan means salary and wages are paid either daily, weekly, or monthly or annually. Performance based plans means salary wages are paid according to piecework. क्या बोल रहा है? Direct financial payments are of two types: time based time based or performance based. Time-based plan means salary and wages are either paid daily, weekly, or monthly or annually. Performance-based means salary wages according to piecework. For example, हाँ समझ गया मैं। हम्म, देखो कितनी अंदर अंदर की बात पता चलती है। ये कोई टीचर बताएगा? कोई नहीं, वो तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। ये कंपनसेशन वगैरह बता के, बस कंपनसेशन ऐसे पैसा देते हैं, लो हो गया, बात खत्म। 10 मिनट में वीडियो खत्म। And there are many methods to calculate compensation under the various incentives plans to reward performance. Certain pay loan pay plans can be created which are a combination of time-based pay plus incentives for higher performance. Various plans may be formulated for paying employees time-based wage or salary as well as performance-based financial incentives and bonuses and employee benefits. Besides, there are some other factors also which influence the design of any plan, like legal labor laws, union company policy, and equity. This we see that the process of staffing includes acquisition, retention, development, performance appraisal, promotion, and compensation um, of the of an organization, that is its human capital. तो क्या है staffing? Acquisition first of all, then retention, then development, then performance appraisal, then promotion, then compensation of the most important asset or resource of an organization, that is its human capital. It needs to be kept in mind. There several factors such as supply and demand of specific skills and blah 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 blah. ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, अब हम एक एक करके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अंदर तक घुसना पड़ेगा। 10 मिनट, 10 पेजेस के लिए 33 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा सा लेट जा रहे हैं और मेरे को एक ब्रेक भी चाहिए, तो 30 मिनट पे एक ब्रेक लेना बनता है। सो 2 मिनट्स ब्रेक।
चलो मैं सोच रहा हूँ ये चैप्टर करने के बाद मैं थोड़ा सा सो जाऊंगा, फिर रात को डायरेक्टिंग करूंगा। बड़ा चैप्टर है डायरेक्टिंग, और कंट्रोलिंग तो यार बिना बात का चैप्टर बना दिया है। मतलब है छोटा सा चैप्टर है। रिक्रूटमेंट refers to the process of finding possible candidates for a job or a function. It has been defined as the process of searching prospective employees and satisfying stimulating them to apply for jobs. ठीक है। Advertising is commonly part of the recruitment process and can occur through several means: through newspapers, using newspaper dedicated to job advertisement; through professional publication, using advertisement placement windows; through job centers; through campus interviews, etc., etc. Sources of recruitment. The object of recruitment is to attract potential employees, the necessary characteristics of qualification, and the adequate number of for the jobs available. It locates available people for the job and invites them to apply for the job and the organization. The process of recruitment proceeds. The process of selection of a right candidate for the given positions in the organization. The recruitment seeks to attract suitable applicants to apply for available jobs. The various activities involved with the process of recruitment includes identification of different sources of labor supply, assessment of their validity, choosing the most suitable source or sources, source or sources. um, उसके बाद क्या है, and inviting applicants for from prospective candidates for their vacancies. ठीक है, the requisite positions may be filled within the organization or from outside. There are two sources of recruitment. Of course, there are two sources of recruitment. Internal sources. हाँ, जो इंटरनल सोर्सेज में देखो, ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया। ट्रांसफर में लेटरल होता है, परफॉर्म में प्रमोशन में ऊपर नीचे होता है, ऊपर ही होता है वैसे, तो डिमोशन तो कम ही होता है। इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इन वन डिपार्टमेंट टू another one shift without a substantive change in the responsibilities and the status of the employee. ठीक है। It may lead to change in duties and responsibilities, working condition, but not necessarily salary. Salary नहीं होती change. Transfer is a good sense of filling the employees from overstaffed departments to overstaffed departments. ठीक है, to understaffed departments. Horizontal movement of employees. Horizontal movement of employees होता है ये। ठीक है, ये सब अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं। Shortage of suitable personnel in one branch may be filled through transfer from another branch. हाँ ठीक है, वो shortage और वो तो बता ही दिया मैंने। Job transfer are also useful in avoiding termination and in removing individual problems and grievances at the time of transfer. It should be ensured that the employee transferred to another job is capable of performing. Transfers can also be used to training of employees and learning different jobs. देखो अब मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ। लर्निंग डिफरेंट जॉब्स का मतलब क्या है। यहाँ पे मान लो आप एक काम, ये रुको एक मिनट, कि आप एक जगह पे हो, यहाँ पे आप टेबल पे बैठ के काम कर रहे हो, फिर आपको उन्हें ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह, दूसरी टेबल पे, फिर आप उन्होंने आपको एक और जगह दूसरी टेबल पर ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे मान लो आप बैठ के सिलाई करते हो, यहाँ पे मान लो बैठ के धागा बनाते हो, और यहाँ पे आप मान लो बैठ के वो कपड़े की वो करते हो, जो भी उस पे ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप बैठ के कपड़े की पैकेजिंग करते हो, यहाँ पे आप बैठ के कपड़े की लेबलिंग ब्रांडिंग करते हो। अब वो आपने उसने आपको पूरा घुमा दिया है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब जब आप पूरा घूम के वापस, मान लो उसने वापस आपको वहीं पे डाल दिया, फिर आपको उस टाइम पहले आपको लगेगा अरे यार इतना घूमा, मतलब तो कुछ हुआ नहीं, बट आपके अंदर जितनी क्वालिटीज आ गई है ना, अब आप कहीं और जाओगे तो आप तो बादशाह हो वहाँ के। ठीक है, अब आप सीधा मैनेजर बनने के लायक हो। पहले आपको खूब सारे ट्रांसफर दे दिया, अब आप बैठोगे सीधा मैनेजर की सीट पे कि हाँ बताओ भाई हमें क्या काम है, तो फिर अब आप दूसरे लोगों को ट्रांसफर करोगे, है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज होती है, थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन होता है एम्प्लॉइज को। जैसे आप कोई वर्किंग, मतलब जैसे लोग हैं विद फैमिली हैं, तो उन लोगों को थोड़ी ट्रांसफर में दिक्कत आती है। वो तो आप लोगों को पता ही है, आपके पेरेंट्स पे कभी ट्रांसफर हुआ होगा तो समझ में आती है भाई, बहुत दिक्कत होती है।
अब बात करते हैं प्रमोशंस की। बिजनेस एंटरप्राइज जनरली फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ filling higher jobs by promoting employees from lower jobs. Promotion leads to shifting an employee to a higher position, gaining higher responsibilities, facilities, status, and pay. Promotion is a vertical shifting of employees. This practice helps to improve the motivation, loyalty, satisfaction of employees. It has the greatest psychological impact over employees because promotion at a higher level may lead to chain of promotions at a lower level in the organization. ठीक है, पूरा ये समझ में आना चाहिए आपको, याद तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इंटरनल सोर्स के मेरिट बताएंगे, फिर मेरिट बताएंगे, वही है यार, इन लोगों का होता रहता है, ये बिजनेस स्टडी यही है, मेरिट डीमेरिट है। ठीक है, इन लोगों को बिजनेस स्टडी के भी मेरिट डीमेरिट बताने चाहिए थे। Employees are motivated to improve their performance. Promotion at a higher level may lead to change of promotion. हाँ तो क्या है, एक मिनट इसको ग्रीन से करूँ। Employees are motivated to improve their performance. A higher promotion may lead to a chain of promotion and level of organization. ये तो पहले ही बता दें, this motivates the employees to improve their performance, to learning and practice. ठीक है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, बढ़िया से मोटिवेट कर देता है। एम्प्लॉयज वर्क विद कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टू रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। ऑल्सो पीस प्रिवेल्स इन द एंटरप्राइज। ठीक है, पीस प्रिवेल्स होता है। Internal recruitment also simplifies the process of selection and placement. The candidates that are already working and the enterprise can be evaluated more accurately. Accurately हो सकते हैं, economically हो सकते हैं. This is more reliable way of recruitment है कि already known है candidates. ठीक है, ये थोड़ा अच्छी बात है, merits है ना। तो इकोनॉमिकल होता है, मोटिवेशन देता है इंटरनल एम्प्लॉयज को, है ना। ट्रेनिंग का टूल है ना। प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था, ऐसे घुमा के पूरा हायर जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर दिया। फिर शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट्स टू दोज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, तो यहाँ पे ये पूरा आ सकता है। तो जैसे अगर मैं बताऊं, अब जैसे ये एक आपकी जगह है जहाँ पे आप लोग काम करते हो, फिर ये एक और जगह है जहाँ पे आप लोग काम करते हो, ये श्रीनगर में है, ये दिल्ली में है। ठीक है, अब यहाँ पे खूब सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, खूब सारे लोग काम करते हैं, मैं कैसे बना दूं, अरे यार ये क्या होने लगा। ठीक है, वो छोटा हो गया, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी खूब सारे लोग काम करते हैं और यहाँ पे भी खूब सारे लोग काम करते हैं। अरे यार ये बनाने में तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब नहीं बनाऊंगा मैं। तो अब वो जैसे मान लो यहाँ पे ये वाले लोग कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे इनकी शॉर्टेज थी, तो आपने इसमें से एक को उठा के यहाँ डाल दिया, तो अब ये यहाँ पे आ गया। तो इससे क्या है, यहाँ पे ओवर स्टाफिंग था, यहाँ अंडर स्टाफिंग था, दोनों की अपनी प्रॉब्लम है, सॉल्व हो गई, मजा आ गया यार। है, ये होती है बात, है कि नहीं बताओ। चलो इसी बात पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइलिंग ऑफ जॉब्स, फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर है भाई। अच्छा, अब लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। चलो फिर से ग्रीन पेन निकालो। When vacancies are filled through internal promotions, the scope for induction of fresh talent is reduced. Scope for induction of fresh talent is reduced. Infusion of new blood वो कम हो जाता है। इन ब्रीडिंग, थोड़ा सा ये आप समझ जाओ, इन ब्रीडिंग बढ़ जाती है। इन ब्रीडिंग क्या होता है, थोड़ा सा जैसे नेपोटिज्म वगैरह जो हो रहा है उससे रिलेटेड हो जाता है ना। द एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक हो जाते हैं एम्प्लॉयज, कहते हैं कि भाई परफॉर्म वो मिलना ही है अपन लोगों को, तो क्यों चिंता करना, है ना। बाउंड परफॉर्मेंस, टाइम बाउंड परफॉर्मेंस है, जैसे गवर्नमेंट में होता है कि भाई आपको कुछ बात तो मिल नहीं जाना है, तो क्यों अपन को पढ़ाई करना, क्यों अच्छे से वो करना, वो तो मिलना ही है। A new enterprise cannot use internal sources of recruitment. हाँ, न्यू एंटरप्राइज कर ही नहीं सकती क्योंकि भैया है ही नहीं कुछ। The spirit of competition among the employees may be hampered. कि भाई कंपटीशन ही नहीं है, हमें पता है यार कौन जा रहा है ऊपर, बस बात ही खत्म हो गई। Frequent transfer of employees may reduce, हाँ often reduce the productivity. Frequent transfers reduce the productivity. ठीक है, तो ये हो गई बात पूरी अपने इंटरनल सोर्सेस की।
अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के। एंड एक्सटर्नल एंटरप्राइज हैज टू टैप। अच्छा थोड़ा सा फिर से कितना टाइम हो गया? 45 हो गया यार, मैं तो बहुत लेट चल रहा हूँ टाइम के हिसाब से। Enterprise has to tap external sources for various positions because all the vacancies cannot be filled through internal recruitment. The existing staff may be insufficient or they may not fulfill the ability or criteria of the jobs to be filled. External recruitment provide the source of bring new blood into an organization. The commonly used external source, हाँ external sources तो बहुत सारे हैं मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहले सारे गिना देता हूँ। फिर है कैजुअल कॉलर्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सीधा यार उठा लेते हैं बंदे को, ठीक है। कैजुअल कॉलर्स में अपने पास लिस्ट होती है, उनमें से बुलाते रहते हैं। एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट छाप देते हैं, बहुत जगह छापने की जगह है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट की होती हैं, वहां से गवर्नमेंट को ले लेते हैं, ए सॉरी एम्प्लॉयज को ले निकाल लेते हैं वहां से। प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये सब प्राइवेट है और काम वही है, बस प्राइवेट है, ठीक है। ये क्या हो गया? कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाता है अच्छा सा, कॉलेज में होता है, आईआईएम्स में होता है ना। उसी के लिए तो काम ही कर रहे हैं यार, उसी के लिए पढ़ाई हो रही है, उसी के लिए लोग कॉलेज जाते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो इंटरनल एम्प्लॉयज हैं वो रिकमेंडेशन दे देते हैं कि भाई साहब ये हमारा बढ़िया दोस्त है, बढ़िया मित्र है, बढ़िया जगह काम करता है, बढ़िया से काम करता है, बढ़िया से उसने मदद कर दी कंपनी की, आप भी कर लो, आपका भी काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया हो जाता है फिर सब। एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग, टेलीविजन पे एडवर्टाइज कर दो, वेब पब्लिशिंग कर दो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से खरीद लो, यहाँ पे कैजुअल लेबर बढ़िया से मिल जाते हैं इन लोगों को। चलो अब थोड़ा अंदर से पढ़ते हैं। अरे बहुत है यार, बहुत दिमाग खराब है। अब यही है, जो जिनको ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाना पड़ता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बस ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकल जाते हैं, जितना हमने अभी पढ़ा है। अब अंदर से पढ़ो। Under the direct recruitment, a notice is placed. Notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of the job available. Job seekers assemble outside the premise of the organization at a specified date and selection is done on the spot. The practice is called direct recruitment is followed to, usually for casual vacancies of unskilled or semi-skilled jobs. Such workers are also known as badli workers, adla badli workers. This method of recruitment is very inexpensive, does not involve any cost, है ना। वैकेंसीज बनाने का फालतू का काम बिल्कुल नहीं होता, इसमें सीधे उठा लिया। Many reputed business organizations keep the database of unsolicited applicants at their office. Such job seekers can be a valuable source of manpower, ठीक है। तो ऐसे एक लिस्ट बना देते हैं और उससे बुलाते रहते हैं लोगों को। ये फालतू में क्यों हो जा रहा है? एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर, हाँ ठीक है, न्यूज़पेपर में कर लो, जर्नल में कर लो, ट्रेड प्रोफेशनल जर्नल, wider choice required. Most of the senior professional blah 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 blah. The advantage of advertising vacancy is that more information of the organization and the job that can be given on the advertisement. Advertisement gives the management a wider range of candidates from which to choose. Advertising may be placed in lead in newspapers. Disadvantage. अच्छा सॉरी, इसको थोड़ी देर को बंद कर देता हूँ ना। ये मेरे को लग रहा है 1 घंटा 40 मिनट तक जाएगा जी, पक्का। ये चैप्टर हो सकता है सबसे बड़ा यही हो जाए, वैसे 2 घंटे वाला है लास्ट तो,
तो वो तीनों होगा। एम्प्लॉयमेंट exchange run by the government are regarded as a good source of recruitment of unskilled and skilled operative jobs. In some cases, compulsory notification of vacancy, blah 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 blah, could manage blah blah blah. A link between serving as a link between employment exchanges help to match personal demand and supply by serving the link between job seekers and employers. Unfortunately, the record of employment exchange are often क्या है अच्छे नहीं होते, not up to date, and many of them candidates referred by them are not be found suitable. ठीक है भाई, अच्छे से बनाते नहीं है ना ये लोग, पागल हैं. In technical and professional areas, private agencies and professional bodies appear to be doing a substantive work. So, placement agency provide a nationwide service in matching personal demand and supply. देखो वही काम कर रही है प्राइवेट एजेंसी, बहुत तगड़ा करती हैं. Agencies compile biodata, large number of candidates, and recommend suitable names to their clients. Such agencies charge fee for their service. Required extensive screening is required. These professional recruiters can entice the needed top executives from other companies by making the right offers. Management consultancy firm help the organizations recruit technical professional and managerial personnel. They specialize in middle level and top level executive placement, middle level and top level executive placement. They maintain data bank of personal code of their different qualifications, the jobs on behalf of blah 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 blah. Campus recruitment, college and institutes of management and technology have become a popular source of recruitment for technical, professional, and managerial jobs. Many big organizations maintain a closer liaison liaison with the universities, vocational schools, management institutes, IIMs, qualified personnel, blah blah blah, recruitment from educational institutes, well-established practice, blah blah blah. ये तो अपन लोग को पता ही है ना यार, इसमें क्या तुम याद करोगे. रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हाँ तो यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेंट ब्ला 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 ब्ला, गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. Such applicants are likely to be good employees because their background is sufficiently known. A type of preliminary screening takes place. Present employees know both of the company and the candidate is listed. Blah blah blah. Labor contractors. Labor contractors maintain close contacts with the laborers and they can provide the required number of unskilled workers. Unskilled workers at short notice. Workers. Labor contractors maintain close contacts with the laborers and they can provide a required number of unskilled workers at a short time. Workers are recruited through labor contractors who are themselves employees in the organization. The disadvantage of this system are that if the contractor himself decide to leave the organization, all the workers will also leave the organization. Advertisement on television पर advertisement कर दोगे, इससे ज़्यादा क्या बोलना है यार, है ना. Web publishing, internet is becoming a common source of recruitment these days. There are certain websites specifically designed to dedicated for the purpose of providing information about both job seekers and job opening. Dedicated certain websites. In fact, websites very commonly visited blah blah blah. Prospective employees, employee searching, suitable people. अब इसमें unstop.com वगैरह आ जाएगा, लिंक्डइन आ जाएगा, naukri.com आ जाएगा, इंटर्नशाल आ जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना. अब क्या बात आती है, मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस. Qualified personnel, wider choice, fresh talent, competitive spirit. ठीक है, ये सब मेरिट्स हैं कि क्वालिफाइड पर्सनल मिलता है बट तगड़ा वाला, चॉइस बढ़िया से ज़्यादा सी हो जाती है व्हेन कंपेयर टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. फ्रेश टैलेंट मिलता है, नया नया ब्लड आता है ऑर्गेनाइजेशन में, न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन. However, it's expensive and time consuming. Competitive spirit बढ़ता है. If a company existing staff will compete with the outsiders, जिसकी वजह से बेटर परफॉर्मेंस होगा. वाइडर चॉइस मिल जाती है,
क्वालिफाइड एंड ट्रेड पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब्स। देखिए यहाँ पे तो करने की जरूरत नहीं है वैसे। अब लिमिटेशंस की बात कर देते हैं। लिमिटेशंस क्या है भाई, थोड़ा सा रेड में अब ज्यादा यूज करने की कोशिश करूंगा। डिससेटिस्फेक्शन अमॉन एग्जिस्टिंग स्टाफ, कि भाई बाहर से लोग क्यों ला रहे हो यार, गुस्सा आ रही है मेरे को। प्रोसेस लेंदी होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें हैं यार, बिना बात का चैप्टर है, सिंपल बहुत है लेकिन लंबा भी है। External recruitment will lead to dissatisfaction and frustration among existing employees. May feel if that their chances on promotion are reduced. देखो, अगर आप में से कोई भी अच्छा अभी तक वीडियो देख रहा है तो फर्स्ट टाइम आई से अगर कोई भी आपको फीडबैक हो कि तेज कर दो या धीरे कर दो या कुछ चीजें स्किप कर दो या बिल्कुल स्किप मत करो, so you can give your feedbacks in the comments so that I can also get an idea that what should I provide to the consumers. Recruitment from external sources takes a long time, और आपको कुछ ऐड करवाना हो, पहले करवाना हो, बाद में करवाना हो, ये नहीं करवाना हो, वो नहीं करवाना हो, ऐसा वैसे जो भी हो मन में बोलो यार, फ्री का है। रिक्रूटमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टेक्स अ लॉन्ग टाइम, द बिजनेस, हाँ लॉन्ग टाइम लेता है यार। अब इसमें क्या मैं समझा दूं, ठीक है, वेरी कॉस्टली, लॉट ऑफ मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, सिंपल सी बात है। सिलेक्शन की बात करते हैं, चलो। सिलेक्शन Selection is the process of identifying choosing the best person out of the number of prospective applies for a job. Towards this purpose, the candidates are required to take a series of employment tests and interviews at every stage, and many are eliminated and a few are move on the next stage until the right type is found. The process may start right from the screening of the applicants and may continue even after the offer of employment acceptance and joining of the candidate. Is so because the process of selection, like any other managerial decision, involves judgment about the performance potential and of the candidate. The effectiveness of the selection process would ultimately tested in terms of the on the job of the choosing person. तो सबसे पहले आ गई अपनी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। चलो मैं निकालता हूँ, ठीक है। फिर करेंगे सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट बहुत टाइप के होते हैं। एक आई इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, करूँगा बोर्ड के बाद। एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, एक ट्रेड टेस्ट होता है, एक इंटरेस्ट टेस्ट होता है ना। अब इसमें से जो एम्प्लॉयर को करवाना है उस हिसाब से वो देख लेगा अपना। एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स होता है, सिलेक्शन का डिसीजन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर जॉब ऑफर करा जाता है ना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अरे बहुत बड़े बड़े प्रोसेस हैं यार, याद करते करते आदमी थक जाए। चलो ये पेज तो बर्बाद हुआ कम से कम। चलो पढ़ा जाए, इसे भी पढ़ा जाए क्योंकि देखो पढ़ना तो पड़ेगा, और कोई चारा होता तो फिर मैं तो भाई चारा ले लेता। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द manager eliminate unqualified unfit job seekers based on the information supplied in the application form. Help reject misfits for reasons which did not appear in the application form. An employment test is a mechanism, either a paper or test, pencil test or an exercise that attempt to measure certain characteristics of individual. Characteristics range from aptitudes such as mental dexterity, intelligence to personality. Intelligence is most important of the psychological test used to measure the level of intelligence quotient. IQ test होता है भाई of an individual is an indicator of personal learning ability. देखिए लर्निंग एबिलिटी चेक कर रहा होता है, और the ability to make decisions and judgments. It is measure of an individual's potential for learning skills. यहाँ पे लर्निंग एबिलिटी होती है, यहाँ पे पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स होता है। इंडिकेट्स द पर्सनल कैपेसिटी टू डेवलप। जब आदमी की मैथ्स और इंग्लिश बढ़िया होती है ना तो वो चीजें सीख जल्दी पाता है ना। और जब एलआर अच्छी होती है तो थोड़ा सा दिमाग तेज चलता है, डिसीजन अच्छे से ले पाता है। पर्सनालिटी टेस्ट से क्या होता है
तो उसके इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम, ये सब समझ में आता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू सिस्टम से बिल्कुल रिलेट नहीं करता तो भगाओ फिर उसको कि जाओ भाई कहीं और जाओ जहाँ पे आपका वैल्यू सिस्टम मैच हो जाए। ये ट्रेड टेस्ट मेजर करता है एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे किसी को सिलाई मशीन आनी चाहिए, अगर सिलाई मशीन पे ले जा रहा है, अगर बाल काटने जा रहा है बाल काटना आना चाहिए। Every individual has a fascination for some jobs and the other interests are used to know the pattern of interest and involvement of a person। मान लो वो ऐसी जगह पे अप्लाई कर रहा है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे टेस्ट हो जाता है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। देखो पूरा तो कोई बता ही नहीं सकता, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये बंदे का इंटरेस्ट सही में है कि नहीं है, कहाँ जा रहा है ये बंदा, है कहाँ जा रहा है। Interview is the formal in the in-depth conversation conduct to evaluate applicants' suitability of the job. The role of the interviewer to seek information from that interview, provide the same. Um, though in present times the interview also seeks information from the interviewer। आज के समय में इंटरव्यू भी थोड़ा सा पूछ लेता है। Many employees request name, address, telephone number, references for the purpose of verifying information, giving additional information to the applicant। ठीक है, थोड़ा सा previous employers known, the previous employers, known persons, teachers, university professors act as references। Selection decision, the final decision has to be made from among the candidates who pass the test। ठीक है, पास द टेस्ट, जो जिनने सब पास कर लिया उनके लिए मतलब इंटरव्यू पास कर लिया, रेफरेंस चेक पास कर लिया, टेस्ट पास कर लिया, उनमें से अब डिसीजन लो भाई किसको जॉब ऑफर दें किसको नहीं दें, क्या करना चाहिए बताओ भाई। बी जनरली कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट हु इज रिस्पांसिबल ब्ला 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 मेडिकल एग्जामिनेशन। सॉरी फॉर दैट। After the selection decision is and before the job offer is made, the candidate is required to undergo a medical fitness test. The job offer is given to the candidate being declared fit after medical examination. Job offer, the next step, selection is to job offer to those applicants who have passed all the previous hurdles. Job offer is through letter of appointment, confirm as acceptance, letter general, blah 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 blah, date by which appointee must report to the duty, contract of employment. After the job offer has been made and candidate accepts the offer, certain documents need to be executed by the employer and the candidate. Once such document is attestation form. This form contains certain vital details about the candidate which are authenticated and attested by him or her. Attestation form will be a valid record for future reference. There is also a need for preparing a contract of employment. Contract of employment बनाओगे. Basic information that should be included in the written contract of employment will vary according to the level of the job, but the following checklist out of its typical headings: job title, duty, responsibilities, date, continuous employment starts, a date when continuous employment starts, and the basis of calculating service rates of pay, allowances, hours of work, leave rules, sickness, grievances procedure, disciplinary procedure, work rules, termination of employment, blah 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 blah. Training and development। चलो भाई, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से पहले थोड़ा सा तो ब्रेक बनता है ना यार। 64 मिनट हो गए हैं, अब पेज कितने हो गए? 21, 63 हो जाने चाहिए थे अभी तक, तो थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा चलता है।
Well, hello. Shout out to Pranjal and Khushi who came to watch this stream. Let's start training and development, which is the last topic, and we'll just go by it fast. Someone has rightly said, if you wish to plan for a year, sow seeds. If you wish to plan for 10 years, plant trees. If you wish to plan for a lifetime, develop people. Nice quote. Training and development is an attempt to improve the current or future employee performance. पहले तो highlighter change कर लेते हैं. Um, by increasing employees' ability to perform through learning, usually by changing the employee's attitude or increasing his or her skills or knowledge. His or her skills or knowledge. ठीक है. Importance of training and development. Training and development की importance देखते हैं. When jobs were simple, easy to learn, and influenced only a small degree of technological changes, there was little to no need for employees to upgrade or alter their skills. But the rapid changes taking place during the last quarter century in our highly sophisticated and complex society have created increased pressures for organizations to readapt the products and services produced, the manner in which products and services are produced, are offered, these types of jobs required, and the types of skills necessary to complete the job. Thus, as jobs have become more complex and importance of employee training has increased, training and development help both the organization and the individual. तो ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे कि बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं. The benefits to the organizations, the benefit of training and development क्या है. सिस्टमैटिक लर्निंग है, ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल. ठीक है. जो कि वेस्टेज, जिसकी वजह से वेस्टेज होता है और एफर्ट भी जाते हैं. इट एनहांसेस एम्प्लॉय प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी. एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स. प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं भाई साहब. हायर प्रॉफिट्स, यहाँ पे वेस्टेज कम हो जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थोड़ा ज़्यादा पता है मेरे को, हाईलाइटिंग थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है. Training equips the future manager who can take over in case of emergency. Equips the future manager. Um, training increases employee morale. Employee morale बढ़ता है. Absenteeism reduce होता है. Employee turnover reduce होता है. Employee turnover मतलब employee भाग जाता है जो. It like बाकी companies में. It helps in obtaining effective response to fast changing environment and technology. Environment, technological and economic. Effective response to fast changing environment. ठीक है. अब बात करते हैं बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय की. एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स होता है. उसके लिए स्किल्स बढ़ जाती हैं, नॉलेज बढ़ जाती है ना. ट्रेनिंग बेटर करियर हो जाता है बेचारे का. बेचारा तो नहीं है. इंक्रीज परफॉर्मेंस हो जाती है. ज़्यादा काम कर पाता है, ज़्यादा पैसे कमा पाता है. ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स, दिस लेस प्रोन टू एक्सीडेंट कम हो जाते हैं. ट्रेनिंग इंक्रीजेस सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है. अब आते हैं ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, इसके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. पहले ये सिलेबस में है कि नहीं है. ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द सिलेबस. तो यहाँ पे बात करी गई है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस. ठीक है. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस द मीनिंग ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग. सॉरी. हाँ, तो यहाँ पे ट्रेनिंग डेवलपमेंट एजुकेशन में डिफरेंस नहीं है, तो इसको भी हम काट दें क्या. देखो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं. Training is any process by which aptitude, skills and abilities of an employee to perform a specific job is increased. It is a process of learning new skills and application of knowledge. ठीक है. ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है, परफॉर्मेंस ऑन करंट जॉब, और या तो प्रिपेयर करता है न्यू जॉब के लिए. चलो इसको हटा देते हैं. ठीक है. एजुकेशन, एजुकेशन क्या है. एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्या. Process of increasing the knowledge of and understanding of employees. It is the understanding and interpretation of knowledge. It does not provide definite answer, but rather than develop a determined. हाँ ठीक है यार, इतना नहीं पढ़ना ना, ये बिना काम का चीज़ है. Development refers to learning opportunities and
पास, ठीक है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस, ये तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होते ही हैं, इसको बढ़िया सा वो कर दो। हाँ, तो ये लर्निंग और ग्रोथ का प्रोसेस है। इसमें क्या है, नॉलेज बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती है। इसमें क्या है, अनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर, ये ओवरऑल ग्रोथ करता है। ये जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें इस प्रोडक्शन बढ़ाना एंड है, इसमें एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना ही एंड है, एम्प्लॉय का करियर अच्छा करना एंड है, ठीक है। सो दिस इज इट। बैटरी बार बार खत्म होना करती है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग मेथड्स, कितना बड़ा है यार। ऑन द जॉब, बस हो गया, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, खत्म होने वाला है। ट्रेनिंग मेथड्स, there are various methods of training. These are broadly categorized on the jobs, on the job and off the job methods. Refer to as data, blah 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 blah. While the actually of the job methods are used away from the workplace, the former means learning while doing, while the latter means learning before doing. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेथड कौन से हैं, चलो इनको पहले से एक बार अंडरलाइन कर देते हैं जल्दी से। एक तो हो गया अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये वैसे आता है, ये इम्पोर्टेंट है। मेरे में आया था अप्रेंटिसशिप, मेरे को याद ही नहीं आया था, मेरे मतलब दिमाग से अप्रेंटिसशिप मतलब ही निकल गया था। कोचिंग हो गया, इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन हो गया। अब ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड से, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्लासरूम लेक्चर हो गया, फिल्म दिखा दो इन लोगों को, है ना। अब मैं फिल्म्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वरना मेरे को गुस्सा है। फिर केस स्टडी हो गया, केस स्टडी भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, ये छोटी मोटी चीजें एक्सप्लेन नहीं करने वाला। कंप्यूटर, अरे ये सॉरी, थोड़ा थोड़ा कहीं पे गलती से हो जा रहा है। कंप्यूटर मॉडलिंग हो गया, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, इसको तो लाल हरा नीला पीला सब कर दो, है ना। बेकार और लग रहा है बट ठीक है यार। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गया, फिर बस चैप्टर भी खत्म हो गया, है ना। तो अब थोड़ा सा एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, येलो कलर, एक मिनट बस में थोड़ा सा। Apprenticeship programs, but the trainee under the guidance. Oh shit, यही मैं गलती कर देता हूँ यार, यही मैं गलती कर देता हूँ। थैंक्स फॉर टेलिंग। क्या करें फिर, तो कहाँ से करा है वो भी नहीं पता ना। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता देता हैं, ज्यादा नहीं हुआ। ट्रेनिंग डेवलपमेंट और एजुकेशन वाला जो है, इसमें ट्रेनिंग डेवलपमेंट एजुकेशन, हाँ यहाँ हाँ ठीक है, ट्रेनिंग मेथड्स हैं। फॉर्मल मींस लर्निंग व्हाइल डूइंग, द लेटर मींस लर्निंग बिफोर डूइंग, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ चलो अब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पढ़ते हैं। Apprenticeship program put the trainee under the guidance of a master worker. These are designed to acquire a higher level of skill. People seeking to enter skilled jobs become, for example, plumber, electrician, iron worker, blah 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 blah. Apprenticeship और prescribed amount of time working, ठीक है यार, मतलब बस ठीक है यार। कोचिंग, कोचिंग में कोच के अंडर डाल देते हैं बस। In this method, the superior guides and instructs the trainee as a coach. The coach or counselor sets mutually agreed upon goals, suggesting how to achieve these goals productively, blah 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 blah, and suggest blah blah। देखो कोचिंग तो सब लेते ही हैं, तो फालतू की बात है नहीं, ठीक है। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है।
It is a joint program of training which educational institutes and business firms cooperate. Selected candidates carry on regular studies for the prescribed period. They also work in some factory or office to acquire practical knowledge and skills. ठीक है. अब बात करते हैं जॉब रोटेशन पे. जॉब रोटेशन क्या है? This kind of training involves shifting the trainee from one department to another or from one job to another. This enables the trainee to gain a broader understanding of all parts of the business and how the organization as a whole functions. The trainee gets fully involved in the department's operations and also gets a chance to test her own aptitude and ability. Job rotation allows trainees to interact with other employees, facilitating the future cooperation among departments. तो जॉब रोटेशन मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि कैसे होता है. एक उसमें अलग अलग जॉब में रोटेट करके उसको बता देते हैं. ठीक है. ऑफ द जॉब मेथड्स, क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, फिल्म्स होती हैं, केस स्टडीज होते हैं, कंप्यूटर मॉडलिंग, ये वाले थोड़े मेन है, ये वाले पढ़ लेते हैं. फिर लास्ट में बस वो और करना रह जाएगा क्वेश्चन आंसर. कितना बड़ा हो गया वीडियो? 1 hour 20 minutes हो चुके हैं. 1 hour 30 minutes मैक्सिमम जाएगा आई थिंक. If anyone else is watching is hi to them also. Computer modeling. It simulates the work environment by programming a computer to imitate some of the realities of the job and allows learning to take place with the risk of high cost that would be incurred if a mistakes were made in a real life situation. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कोई कॉल आ गया था. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. अच्छा, तो यहाँ पे ये है, देखो जैसे कोई एरोप्लेन वाले मतलब पायलट को ट्रेन करना है, तो पायलट को ट्रेन करने के लिए आप सीधा उसे चलाने को नहीं दे दोगे ना. साइकिल थोड़ी है कि आपने दे दी बच्चे को चलाओ, लो चलाओ, तो हम पीछे से वो लगाए पापा, है ना, पकड़े हुए हैं, चलाओ बेटा साइकिल. ऐसे नहीं होता ना. फ्लाइट है, अगर मतलब एरोप्लेन है, गिर गया तो अगर लोग हैं तो लोगों की जान जाएगी, तो और दिक्कत है, और अगर लोग नहीं है तो वैसे भी बहुत खर्चा हो जाएगा. राइट. ये यहाँ पे ये क्यों दिखा रहा है? ये लाइव बंद हो गया क्या? नहीं नहीं, सही है. अब वेस्टिबुल ट्रेनिंग की बात करते हैं. Vestibule employees learn the jobs on the equipment they will be using, but the training is conducted away from the actual work floor. Actual work environments are created in a classroom, and employees use the same materials, files, and equipment. This is usually done when an employee are required to handle sophisticated machinery and equipment. अब देखो, मेरे को नहीं पता, जब पूरा ही वो करना पड़ रहा है, हाईलाइट तो मेरी गलती नहीं है. इट्स अ सिंपल सेंटेंस और वो याद रहना चाहिए, मतलब दिमाग में आना चाहिए कम से कम कि देखो दूसरी जगह क्लासरूम बना के आपको वही सेम इक्विपमेंट दे दिए जाते हैं जिसमें आप फिर वहां पे आप ट्रेनिंग करते हो. अब जैसे कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो सॉरी हाईली क्वालिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाई एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो इक्विपमेंट्स एंड वो मशीनरी वहां पे दे दी जाती है, और क्लासरूम में वैसा सेम एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करके समझा दिया जाता है कि आपको कैसे काम करना है. ओके. प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये सब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है बाय द वे. दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स अ pre-arranged and proposed acquisition some specific skills or general knowledge.
Information is broken into meaningful units, and these units are arranged in a proper way from a logical and sequential learning package. Learning package बना देते हैं that is simple to complex. The training goes through these units by answering questions or filling the blanks. हाँ तो ठीक है, पूरा एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करके बना के दे दिया जाता है उन्हें, पूरा लर्निंग पैकेज कि आप देखो ये वीडियो देखो, फिर यहाँ से क्वेश्चंस को वो आंसर करो, फिर ये वीडियो देखो, फिर क्वेश्चंस को आंसर करो, फिर ये वीडियो देखो, फिर क्वेश्चंस को आंसर करो। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे आप लर्निंग सीख जाओगे और बस हो गया काम। ये कोर्सेज मोस्टली ऐसे डेवलप होते हैं। देखो मेरे को याद नहीं है, मेरे को मोस्टली चीजें याद तो रहेंगी नहीं, तो पीछे जाके देखना पड़ेगा। व्हाट इज मेंट बाय स्टाफिंग बताओ। स्टाफिंग इज पुटिंग द राइट पीपल ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। बस ठीक है। It includes estimating the manpower requirement, then making job descriptions, and stimulating the prospective employees to join the job, then go on with the selection and selection process, and placement and orientation and etc. जितने भी होते हैं सब डाल दो। इससे बड़ा क्यों ही देना, वैसे तो पहले ही लाइन से हो जाएगा पूरा डेफिनेशन। स्टेट द टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाएगा अपना कौन सा प्रमोशन और ट्रांसफर, और एक्सटर्नल में तो बहुत सारे होते हैं। वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री, हाँ चलो ये मैं नहीं पढ़ूंगा। क्वालिटी, हाँ ये भी नहीं पढ़ूंगा, ये बड़े मैं नहीं पढ़ रहा। हाँ, व्हाट इज मेंट बाय रिक्रूटमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट देखो वो तो होता ही है, स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स, लेकिन उससे पहले भी कुछ होता है, तो वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और सिलेक्शन से कैसे डिफरेंट होता है। सिलेक्शन से ऐसे डिफरेंट होता है कि रिक्रूटमेंट में सिर्फ आप उन लोगों को स्टिमुलेट कर रहे हो टू अप्लाई फॉर जॉब्स, वाइल सिलेक्शन में आप जो कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार हुई है बेस्ड अपॉन द रिक्रूटमेंट, आप उनमें पूरा प्रोसेस कर रहे हो थ्रू विच आप सिलेक्शन करोगे। अब देखो प्रोसेस याद तो इतने में हुआ नहीं है ना, वो अभी हमने सब पढ़ा है, तो वो याद करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ऑफ कोर्स, है ना। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है वो बड़ा सा प्रोसीजर है। HR मैनेजमेंट इंक्लूड मैनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज, वो ड्यूटीज भाई स्टाफिंग प्रोसेस आप समझा दोगे तो वो HR डिपार्टमेंट की ड्यूटीज हो जाएंगी, है ना। जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना रहता है वगैरह वगैरह, प्लेसमेंट वो सैलरी वगैरह डिसाइड करनी पड़ती है, वो क्वालिफिकेशन डिसाइड करनी पड़ती हैं, अप्रेजल देना पड़ता है, ठीक है बस इतना ठीक है। So that's it for this one। मैं इसका जो PDF है वो आपको वही जो ड्राइव लिंक बाकी उसमें डालिए, हो सकता है इस वाले कमेंट्स में भी डाल दूं, उसमें आपको दे दूंगा LEBS 106। Thanks for watching, I will see you in the next one। अब मैं चाहता